Hey guys, Assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. I am doing good too, Alhamdulillah. Thank you so much for clicking on this particular video. So in today's video, what I'm going to be doing is I will be shopping my stash. So ये वाला concept बहुत बाहर के YouTubers करते हैं, स्पेशली इन द यूएस। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये करती हूँ पर्सनली। मुझे पर्सनली ये करना था। देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। द रीज़न बीइंग कि I tend to review a lot of makeup products, and then there are some makeup products that become favorite. Like as I try, some will become favorite, and the favorites become old favorites, and they just get, you know, just stacked up. And थोड़े products होते हैं जिनके बारे में ध्यान आता ही नहीं है। Ignore my हुलिया, I'm just feeling like I look but any which ways ध्यान नहीं जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड बड़े बड़े ऐसे ही एक्सपायर होते हैं। जो भी ऐसा है कि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करने पड़ते हैं, एंड इसी चक्कर में मेरे फेवरेट्स नए फेवरेट्स बनते जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा दिस ईयर 2024 मैं अपने खुद के मेकअप से पूरा एक स्टैश इकट्ठा करूँगी, शॉप करूँगी मेरे मेकअप कलेक्शन से, एंड वही प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँगी जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं किए हैं, बेरिंग लाइक एक दो छोड़कर, बिकॉज मेरे पास शायद उस वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे मस्कारा हो गया, मैं मस्कारा ज़्यादा होल्ड नहीं करती हूँ, बिकॉज मोर देन 3 to 6 मंथ्स से ज़्यादा मैं एक मस्कारा अपने वैनिटी में नहीं रखती हूँ, बिकॉज मेरी आइज़ एज इट इज़ वेरी सेंसिटिव है, एंड मस्कारा की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो मस्कारा हो गया, आईब्रो प्रोडक्ट्स हो गए, मैं ज़्यादा स्टैश नहीं करती हूँ। तो उसके अलावा जो फेस प्रोडक्ट्स हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स मेनली मैं अपने कलेक्शन से जो यूज़ नहीं किए हैं वो यूज़ करके मेकअप लुक करूँगी। सो जो भी मेरा मन करे, जो भी मुझे करना है, तो मैं मेकअप का नाम नहीं दूंगी कि स्मोकी आई, रेड आई, ब्लू आई, पिंक आई, नथिंग लाइक दैट। जस्ट शॉपिंग माई स्टैश एंड just letting my creative juices flow, and we will create a look. So that is what I'm planning. तो आज के लिए मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। वन मोर थिंग यू गाइज, इसमें एक आध ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स भी होंगे जो मैंने ट्राई ही नहीं किए हैं, बट मैंने लेके वैनिटी में रखा है। तो इससे क्या होगा, मैं जब ट्राई करूँगी तो उसके क्लिप्स में लेके एक पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगी इसी बहाने। अदरवाइज़ ये रह के टाइम चला जाएगा, फिर रिव्यू बनाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए दैट इज़ वॉट वी विल बी डूइंग। सो दोज विल बी न्यू प्रोडक्ट्स इन माई stash, but they might or might not be new products in the market. So I hope you guys understood all of that. तो अभी मैं फटाफट से जो products मैं यूज़ कर रही हूँ मैं वो दिखा देती हूँ। फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग विश केयर का एलोवेरा जेल। ये बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको आज यूज़ करूँगी। एंड उसके ऊपर आई एम गोइंग इन विद ब्लू हेवंस कंसीलर एज अ करेक्टर। आई बी यूजिंग दिस बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा करेक्टर्स की कलेक्शन नहीं है, तो ये वाला मैं बहुत यूज़ करती हूँ। आई थिंक आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा, तो मैं ये वाला कंटिन्यू करूँगी यूज़ करना। फिर तो ऑरेंज को हाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस पर्टिकुलर वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। दिस इज़ देयर प्राइमर मूस फाउंडेशन। देन उसके ऊपर मैं और थोड़ा सा मिक्स करूँगी उसके साथ ऊपर में टू गिव अ प्रॉपर बेस। दिस इज़ फ्रॉम NY बे वाइट कॉफ़ी 8 शेड। मैंने ये बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो आई वॉन्ट टू मेक यूज़ ऑफ दैट। देन आई एम गोइंग इन विथ पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फेस पाउडर्स, बट ऑफ लेटली मैंने के ब्यूटी का फेस पाउडर ख़रीदा है। जब से मैंने वो लिया है मैंने ये वाला टच ही नहीं किया है, तो ये वाला मैं आज ट्राई करूँगी। सो एंड आई विल गिव रेस्ट टू के ब्यूटी। अगर मेरा रिव्यू नहीं देखा है के ब्यूटी पाउडर का, तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड फॉर कंसीलर आई एम गोइंग इन विथ स्विस ब्यूटीज लिक्विड कंसीलर because I want to highlight it a bit, and this is in the shade 02. For the bronzer I am going in with NY Base contour bronzing stick. I will be using in the shade toffee. मैंने ये लेके शायद एक बार यूज़ किया होगा, उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं किया है, तो उसको मैं यूज़ करना चाहूँगी। एंड देन आई एम गोइंग इन विथ Rimmel London's bronzer, powder bronzer. This is like
This is 002 bronze, and this I'll be setting the cream bronzer with this one. And I have used it somewhat, as you can see, and एक बार मैं travel में लेके गई थी तो ये ऊपर का lid crack होके टूट गया था, and तब से मैंने रख दिया है, यूज़ ही नहीं किया है. I've just put some cover on top of it so that the product doesn't dry down. For blush, I'll be using a Rare Beauty's a Nearly Rose shade. I got this way back जब Rare Beauty launch भी नहीं हुआ था इंडिया में, and जब Rare Beauty launch हुआ मैं कुछ कामों में बहुत बिजी हो गई, मैं रिव्यू नहीं कर पाई, and right now I am not promoting that brand for some personal reasons, so I will be using that and making sure I finish it up and just throw it off, so that's why. And then I am going in with iMagic's Touch blush palette, and this I will set the cream blush with this powder blush, and this particular one is new, pretty new to my collection, but there is no sense of making a review is what I feel, because बहुत लोगों ने already किया होगा. It's a very old product, but अगर आप review चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं separately review कर दूँगी. For my highlighter, I'll be using Swiss Beauty's Silky Mousse highlighter in the shade 01 Tiramisu. One of you guys had asked me to review this particular product, so I have got it really recently in my collection. इसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी. आई थिंक इसके बाद आ जाएगी वो वाली वीडियो. फॉर द लिप्स, आई एम गोइंग इन विद LA18's Oh My God lip gloss. This is a fairly new launch in the market, and I've just had it in my collection just now, so I going to be doing a review video. ये मेकअप लुक के बाद शायद LA18 का जाए, फिर उसके बाद ही हाइलाइटर का जाए, because this is fairly new product, so I want to put this in the priority list. Mascara, I'll be using Ilia's mascara in the shade After Midnight. So this is a black mascara. इसकी एक्सपायरी ऑलमोस्ट होने को है. 5 months मैंने इसको यूज़ करा है, तो आई प्रीटी मच वांट टू मेक यूज़ ऑफ दिस द होल मंथ and create a look. By the way, shop my stash is only for this video. For next time when I make a shop my stash video, I'll be using different set of products. Maybe 1 or 2 products will be the same, but most of the products will be different, depends on how much collection I have and how many products I add and declutter and all of that. तो मैं frequently declutter करती रहती हूँ, so depends on that. And for eyeshadow, I have a whole cluttered table, so if you see, you will just run out. And for eyeshadow, I'll be finally making use of Morphe's James Charles palette. This palette is no longer available. I think last year जब Morphe ने बोला कि they will be closing down their particular business, that time some of these palettes stopped in production, like they stopped making these palettes. So I'm finally going to be using it. मैंने यूज़ ही नहीं किया है. लग तो रही है गंदी, बट मैंने यूज़ नहीं करा है, तो बिकॉज इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है एंड पकड़ के मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है. दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन, बट I've just kept it on my desk right now, so pretty much I'll be creating a lot of makeup looks using this so that I get my money's worth, because this was expensive. So these are pretty much all the products that I'll be using. I'll change my clothes and wear something else, and then we will start the video. And if you haven't subscribed, please subscribe to my channel. Alright, doing a mini voiceover and then I will add music. So I've started off my makeup with the products that I showed you guys before. And if you guys need links, everything will be in the description box. And I hope you guys will recreate this and leave good comments as well. And let me know what are the videos you want me to do, and I'll be more than happy to do that, because I am very interested in knowing what you guys would want to buy and what are your wish lists and everything. So that is all I wanted to come and say here, and now I will add music to the video, and you just can relax and watch the entire makeup being done.
and if you did, you know what to do. Please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. I'll see you guys in the next one. Till then, you guys take care, stay safe. Mwah.